So okay, this is the fifth lecture or sixth. तो आप क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन? हाँ सर सर हमने एक एग्जांपल कर ली थी। हमने एक एक्स नॉन एम्प्टी लिया था, ओके ये लिया था कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। ये तो फिर हमने एक सिमिलरिंग ली थी जिसमें हमने ई यूनियन फाई लिया था। मैं बोल रहा हूँ फाई की क्या जरूरत है, अगर हम ई भी लेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि उसमें फाई तो आएगा ही। नहीं जरूरी नहीं. सपोज देखिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप ये एग्जांपल लीजिए. 1 मिनट. ये लोग ज्वाइन हो रहे हैं. So let's take this x equal to, say, let's take we set say 1 2. Then I can choose f the collection, not the collection of all disjoint sets. मैं f सिर्फ ये ले सकता हूँ. This is also collection of disjoint subsets of x, क्योंकि मैं सारे सेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आपको समझ आ रहा है? हाँ सर. तो जब हम कहेंगे ना कलेक्शन ऑफ ऑल डिसजॉइंट सबसेट, उसमें तो ओबियसली एम्प्टी सेट होगा ही. तो इन जनरल अगर मैं कहूँगा x को इस सेट लूँगा, देन आई चूज अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ x. इट मे नॉट कंटेन द एम्प्टी सेट बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द ऑल डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ x. आपको बात समझ आ रही? जैसे ये मैंने f लिया है. अब आपका जो s होगा वो होगा ये s जो आपका होगा, दैट्स f यूनियन दिस एम्प्टी. अब जरूरी लेना है. हाँ सर. ठीक है, आपको समझ आ गया ये? हाँ सर. हाँ सर. ओके. तो हमने कहाँ लास्ट लेक्चर छोड़ा था? हम एग्जांपल्स देख रहे थे जब हमने एक्स एक आर एन लिया. अच्छा ओके ओके, एक्स को लिया था आर एन. यस. एग्जाम्पल हम ले रहे थे. सो लेट एक्स बी इक्वल टू आर एन and let's define Sn, which is equal to collection of the product of n copies of semi-closed interval. Product of n copies of it's a1 b1 cross a2 b2 a and b, such that these ai's and bi's, they are all real number. 1 lesser equal to I, lesser equal to n. So this is your Sn. Then this Sn is a summary. Is a summary. ये आपको चेक करना है. First property, this the empty set, the phi set should be there. Okay, let's use induction. We use induction on n. Okay, we use induction on n. For n equal to 1, then this s1, what's s1? S1 is equal to the just it's a collection of semi-closed intervals. It's a1
B1 such that A1 B1 belongs to R. So this is a semi-ring. This we already done है S1 ना, ये हमने और पहले किया ना, collection of all semi-closed functions. And therefore it's and therefore S1 is a semi-ring. So thus the result holds for n equal to 1. तो n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है, ठीक है जी सर. So let's assume that result is true for n equal to k, and we'll prove that it also holds for n equal to k plus 1. Okay. तो वीडियो सब लोग ऑन रखिए ड्यूरिंग लेक्चर. Assume that the result is true for n equal to k, that is sk which is equal to this correction. जी सर. A1 B1 cross. So it's the product of k copies. That's what it key. This is assembly. We show that this sk plus 1 is assembly. Result also holds for n k plus 1. Okay, we show that this one. ak plus 1 bk plus 1 such that these ai's and bi's, they are all in R with 1 lesser equal to I lesser equal to k plus 1. We show that this set is a semi-ring, this collection is a semi-ring. मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊं. ओके, प्रॉपर्टी 1 5 सेट शुड बी sk plus 1 है ना, वो होना चाहिए इसमें sk plus 1. We have this set A1 B1 cross AK plus 1 BK plus 1 is equal to the empty set if for some I
for some I with 1 lesser equal to I lesser equal to k plus 1, this AI is greater than bi. अगर a1 होगा ना ग्रेटर देन b1 तो ये पहला सेट जो होगा ना ये एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी सेट के साथ तो आप लीजिए वो एम्प्टी सेट ही है। ओके, तो अगर किसी एक आई के लिए ए आई ग्रेटर देन बी आई होगा, वो जो इंटरवल होगा, वो जो सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा, वो एम्प्टी सेट होगा आपका। है वो जो सेट होगा ना वो एम्प्टी, और इसका प्रोडक्ट जब आप लोगे इनके साथ तो वो भी एम्प्टी। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट दिस k plus 1 copies of semi closed interval is equal to the empty set in that case. So for some आया, क्योंकि हमें सारे रियल नंबर लेने हैं तो कोई ना कोई हम चूज कर सकते हैं ए आई ग्रेटर देन बी आई। चूज कर सकते हैं, चूज दिस। मैं पहला करूँगा चूज, मैं चूज करूँगा यहाँ पर 2 से मैं आई विल चूज दिस 2 and 1। a1 में 2 लूँगा, b1 में 1 लूँगा, फिर मैं बाकी इंटरवल ऐसे ही लूँगा a2 b2 a3 b3 a k plus 1 b k plus 1। तो वो जो k plus 1 कॉपीज होगी ना यहाँ पर, जब जहाँ अगर मैं a1 को चूज करूँगा 2 b1 को 1, उस केस में ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके, सो thus this phi set it belongs to yes k plus k 1 plus 1। Thus phi belongs to sk plus 1। So next this sk plus 1 is closed under finite intersection। So let's choose any two sets here. Let A equal to bk plus 1, okay. And let's choose another set B which is equal to sorry, so let's choose these elements c1 d1, okay. Belongs to sk plus 1। we show that A intersection B also belongs to sk plus 1 To verify this, we make the use of following identity. Following identity, what's that? Is A cross it's not this A, okay. A cross B intersection C cross D is equal to A intersection C cross B intersection D। It's A intersection C cross B intersection D। Is it
cross C. Is this identity valid or not? If I choose to find here the pair x comma y here, that means x comma y means x comma y belongs to a cross b and x comma y belongs to c cross d, which means x belongs to a, y belongs to b and x belongs to c. So x belongs to a and c, that means x belongs to a into c, y belongs to b and d, that means y belongs to it's okay. This is the valid. You can easily verify it. Can easily verify this identity. It is very simple. So इसको अगर आप verify करना चाहोगे, so it's the cross product actually. So you must choose a pair. Let x comma y belongs to a cross b intersection c cross d. This is true if and only if x comma y belongs to a cross b and x comma y belongs to c cross d. This is true if and only if x belongs to a and y belongs to b, and here it means x belongs to c and y belongs to d. So this is true if and only if x belongs to a and x belongs to c. Okay, write this as and y belongs to b and y belongs to d. But this means that x belongs to a intersection c and y belongs to b intersection d. So this means that the pair, because x is a pair, the first element belongs to a intersection c and the second one belongs to b intersection d. So that means this xy belongs to a intersection c cross b intersection D. so that these two sets are equal. हाँ sir. Equality holds. So now we see this our a intersection b. So this is the identity that we have proved. Now what's this a intersection b जो आपके सेट्स है a intersection b. What's our a is a1 b1 क्रॉस a के प्लस 1. मैं पहले a के लिखूंगा, a के b के, देन a के प्लस 1 b के प्लस 1. The intersection with b, what's b? B is c1 d1. C D1. Okay, this is equal to मैं ये जो है ना k तक जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको मैं a1 से डिनोट करूँगा, a1 क्रॉस, और इसको मैं b1 से डिनोट करूँगा, b1 इंटरसेक्शन विद, यहाँ पर मैं इसको a2 से डिनोट करूँगा क्रॉस b2. आप अगर लिखोगे भी वायर दिस a1 is equal to a1 क्रॉस a1 b1 क्रॉस a के b के, और इसका जो दूसरा है b1 is equal to C1 a के प्लस, sorry, no, not it's a1 cross b1. a1 is first, the output k, it is the product of k copies, and this is your b1. It's ak plus 1
बी के प्लस वन। समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। इसी तरह से आपके पास A2 है, दैट्स इक्वल टू C1 D1 अप टू CK DK। ओके, C1 D1 क्रॉस CK DK, DK and then finally we have B2, it's equal to CK plus 1 CK plus 1 DK plus 1. 1। Now we apply the previous identity. It's A1 intersection A2 cross B1 intersection B2 by applying the previous identity. This one, it's equal to A1 intersection A2 cross B1 intersection B2. So this is equal to A1 intersection A2 cross B1 intersection B2. B2 But this A1 and A2, it's a product of K copies, it belongs to SK, and B1 comma B2, it's just the one interval, it belongs to S1. So therefore by inductive hypothesis, क्योंकि हमने प्रूव एज्यूम किया है कि रिजल्ट होल्ड्स फॉर K by inductive hypothesis, we have this A1 intersection A2, it belongs to SK, and B1 intersection B2, it's a base case for n equal to 1, result also holds for n equal to 1, it belongs to S1. So this one belongs to S1, this one belongs to SK, this one belongs to S1. So what's their cross product? This implies A1 intersection A2 cross B1 intersection B2. So this is the product of K intervals, okay? Product of K semi-closed interval. This is the single interval, semi-closed. So that means that this whole is the product of K plus 1 semi-closed intervals. So it belongs to SK plus plus 1। Got it? हाँ सर। Okay, so thus result holds for n equal to K plus 1 also. So next, finally we will see that this the difference of two sets can be expressed as a finite disjoint union of members of S के, क्योंकि हमने माना है कि रिजल्ट होल्ड हो रहा है किसके लिए, रिजल्ट इज ट्रू फॉर K, अब हमें K plus 1 के लिए प्रूव करना है. सो नेक्स्ट पेज पर मैं आ जाऊं. दैट्स थर्ड प्रॉपर्टी. सो थर्ड में मुझे चूज करने हैं दो एलिमेंट्स एस के प्लस 1 में. लेट ए इक्वल b k plus 1 comma b is equal to c1 d1 cross ck plus 1 dk plus 1 belongs to sk plus 1. Okay. We show that a minus b can be expressed as the finite disjoint intersection union as expressed as a finite
disjoint union of members of Sk plus 1. One. So let's again choose first यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी वेरीफाई फर्स्ट वी verify the following identity, and that identity is about the difference actually. जैसे अभी आपने प्रूव की वो identity about the intersection, अब आपके पास जो identity है that's about this so that identity is it's A cross B minus C cross D, where A, B, C, D are any four sets. A cross B minus C cross D, it's equal to A minus C cross B A minus C A minus C A minus C cross A minus C cross B, A minus C cross B, then it's union with A intersection C cross B minus D. A, let's close this bracket. It is मैं इसको next page पर लिखूंगा. So this is the identity A cross B minus C cross D. It's equal to A intersection C A minus C, sorry, A minus C intersection B, union with the, it's a disjoint union actually, it's a union with A intersection C cross B minus D. A intersection C cross B minus D. So this is it's A minus C cross B, A minus C cross B, okay, then it's union A intersection C cross B minus D. Yes, this is your identity that you have to verify. So let's verify this identity, and we will make the use of this identity verification. So again let's choose because it's a cross product, so we must choose a pair. Let x comma y belongs to A cross B minus C cross D. So this means that this is true if and only if x comma y belongs to A cross B, but x comma y does not belongs to C cross D. This is true if and only if x belongs to A and y belongs to B, but since this pair is not in C cross D, therefore either x is not in C or y is not in D, but either x is not in C
और y इज़ नॉट इन डी। अब आपको किस तरह से ऐसे एक्सप्रेस करना है। सो x इज़ इन ए, अगर मैं पहला केस लूँगा ये वाला, x इज़ नॉट इन सी, x belongs to a but x is not in C, y is always in B, okay, हाँ सर। okay, and y is in B, it's always in B। अगर ऐसा होगा तो ये भी ट्रू हो सकता है, और अब ये और क्योंकि x इधर C और नॉट इन D, तो सेकंड केस में क्या Y होगा, is in D। सेकंड केस में होगा कि x तो C में होगा मगर y D में नहीं होगा, क्योंकि दोनों में एक चॉइस। तो अगर आप लोगे ना x C में सपोज, इसका मतलब है कि आपको लेना ही पड़ेगा कि y D में नहीं है। तो फर्स्ट केस में आपने लिया है कि x C में नहीं, सेकंड केस में आप लोगे x सपोज C में है, सो देन y शुड नॉट बी इन D बिकॉज द पेयर x y इज नॉट इन C as D, जी सर। ओके। तो वो हम लेंगे। सेकंड केस ये है x belongs to A and x belongs to C, okay, x belongs to C, Y belongs to B। but this y is in B, y is in B मगर D में नहीं है, that means y belongs to B minus D, you can write this। आपको समझ आ गया ये? हाँ सर। ओके यार, अब देखिए ये यही एक्चुअली है जो आपने लिया ना यहाँ पर, और है ना, और मीन्स द यूनियन। सो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, मैं पहले ये पेयर लिख दूंगा, दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a माइनस c एंड y बिलोंग्स टू b। दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a माइनस c एंड y बिलोंग्स टू b, और x belongs to A intersection C and y belongs to B minus D. So this is true if and only if x comma y belongs to, सर ऊपर नहीं आएगा y belongs to B intersection D। B intersection D, no no, B, एक मिनट पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस स्टेप को। x comma y belongs to A minus C and y is in D, it's cross T, y is in B, sorry, union x belongs to A intersection C, so here it is first A intersection C and y belongs to B minus D cross B minus D। तो मैं प्रीवियस पेज पर आ जाऊँगा। अब क्या कह रहे थे? हमने पहला केस लिया ना कि x not equal to C but y is in D। एंड y तो कहाँ लिया y is in D? y मैंने B में लिया, B में नहीं लिया ना, B में लिया। y जो है ना y हमेशा B में होगा, केस फर्स्ट में। हाँ केस फर्स्ट में y, तो y हमेशा B में होगा। अब आपकी सेकंड चॉइस है, मतलब सेकंड चॉइस क्या है, क्योंकि B में तो इसको होना ही पड़ेगा, तो y B में है मगर फर्स्ट केस में आपने लिया कि x C में नहीं है। अब ये भी पॉसिबल है कि y भी D में नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट केस में, मतलब दोनों, ना ही x C में होगा ना y D में होगा, मगर वो दोनों केस कवर हो जाएगी इसमें, क्योंकि हमने r लिया बीच में, तो y इज इन B माइनस D। y मैंने B में लिया फर्स्ट केस में मैंने y मुझे हमेशा B में लेना ही पड़ेगा, बिकॉज द पेयर x y बिलोंग्स टू A क्रॉस B माइनस C क्रॉस D, तो x हमेशा A में है और y हमेशा B में है, इट्स ऑलवेज ट्रू। मगर सेकंड यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट केस मैंने लिया x अगर C में नहीं होगा, तो इसमें यह है कि y D में भी हो सकता है और D से बाहर भी हो सकता है, तो मैंने इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिया y बिलोंग्स टू B, मतलब D पर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है, सिर्फ मैंने रखी x
सी में नहीं है। एक्स में। देखिए आपके पास ये है। अब मैं अगर बताऊंगा ना, ये इस तरह से आपको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट पेज, अगर कोई पेयर किसी क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं है, सपोज सी क्रॉस डी में नहीं है ये, तो इसका मतलब ये है कि एक्स सी में नहीं है और वाई डी में नहीं है। मैंने पहला केस लिया कि एक्स सी में नहीं, इस पर अब मैंने इसके दो केस लिए। केस एक मैंने लिया कि एक्स सी में नहीं है, और दूसरा केस मैंने लिया है एक्स अगर सी में होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज है ना आपके पास। वाई पर मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है। देखिए एक्स अगर सी में नहीं होगा, वाई मेरा फ्री है, वाई डी में भी हो सकता है और डी से बाहर भी हो सकता है। मगर जब मैं सेकंड केस लूँगा ना, एक्स सी में है, उस टाइम मुझे वाई पर कंडीशन रखनी पड़ेगी कि वाई डी में नहीं है। नहीं जी सर। फर्स्ट अगर केस वो में होगा वाई तो फ्री, फिर फर्स्ट केस में वाई मैं फ्री रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने लिया है कि एक्स इज नॉट इन सी। मुझे एक्चुअली ये वायलेट नहीं होना चाहिए, एक्स वाई इज नॉट इन सी क्रॉस डी। जी सर। ओके, हाँ सर। तो ये आपके पास आ गया। सो दस वी हैव this A cross B minus C cross D